I conclude my speech. Thank you, sir. श्री एसटी आसन। थैंक यू सर, आपने मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलने का मौका दिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपने में बहुत सक्षम है सर, और जिसकी वजह से आज हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर भी सके। आप अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, अमेंडमेंट्स में हम आपके साथ हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं आपके अमेंडमेंट्स को। लेकिन मैं कुछ बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं मंत्री जी के, खासतौर से आपके थ्रू, कि एक जो प्रॉब्लम है जब वाइल्ड एनिमल मैनीटर हो जाता है, खासतौर से टाइगर जब मैनीटर होता है, तो उसको हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में धारा 11 में प्रोविजन है कि उसको नष्ट कर दिया जाए। लेकिन हमारे अधिकारी आजकल इतने प्रेशर में एनजीओस के, क्योंकि आपको मालूम है लोग अपने आप को प्रोमिनेंट होने के लिए बहुत सी एनजीओस खोल लेते हैं, वाइल्ड लाइफ लवर बन जाते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वो उनको सिर्फ किल करने का ऑर्डर नहीं देते बल्कि वो ट्रैंकुलाइज करने का ऑर्डर देते हैं। अब इस समय भी रामनगर रेंज के अंदर मोहान के पास एक टाइगर मैनीटर हो गया है। उस टाइगर ने एक जवान आदमी को अभी 20 दिन पहले मारा है। अगले दिन जब उसकी लाश को ढूंढा गया तो सिर्फ उसका इतना हाथ लोगों को मिला, बाकी पूरे खा गया। उसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ट्रैंकुलाइज करने के लिए कम से कम 15-20 मीटर पे जब टाइगर होगा तो ट्रैंकुलाइज होगा, और 15-20 मीटर पे एक टाइगर मैनीटर टाइगर के पास जाना आसान बात नहीं है, कोई नहीं पहुंच पाता। और ट्रैंकुलाइज आप रात में नहीं कर सकते। ट्रैंकुलाइज अगर आपने कर भी दिया तो आधे घंटे बाद वो ट्रैंकुलाइज होता है, और वो जंगल के अंदर कहां जाके बेहोश हो गया आपको पता नहीं। आधे घंटे बाद वो फिर होश में आ जाता है, उठ के चला जाता है। क्यों नहीं शूट करने का ऑर्डर दिया जाता? शिकारी लोग शूट करते हैं, हमेशा से होता चला आया है, क्योंकि शिकारी 100 मीटर से लेकर 200 मीटर तक इस टाइगर को मार सकते हैं, और शिकारी रात में भी मार सकते हैं। ट्रैंकुलाइज रात में नहीं किया जा सकता। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि कम से कम इंसानी जानों की कदर को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए जरूरत इस बात की है कि जानवर को जल्द से जल्द मार दिया जाए। दूसरा सर, हमने देखा कि हमारे एरिया के अंदर ल्यूपर्ड बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आता हूं। मुरादाबाद के तहसील कांठ, तहसील ठाकुरद्वारा और बराबर के जिलों में आए दिन ल्यूपर्ड की, चीतों की घटनाएं होती रहती है। जानवरों को मारते हैं, इंसानों को जख्मी करते हैं। ये इन लोगों को, इन चीजों को, इन ल्यूपर्ड्स को पकड़कर इनको अपने डेस्टिनेशन पे, अपने हैबिटेट में क्यों ना भेजा जाए। अब जहां हैबिटेट की हम बात कर रहे हैं, मंत्री जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। हम बातें बहुत करते हैं, रामनगर रेंज के अंदर अभी सैकड़ों बीघे का वर्जिन फॉरेस्ट काटा गया है, सैकड़ों बीघे का, और जिसके अंदर ऐसे ऐसे पेड़ थे कि जिसमें 5 आदमी भी अगर ऐसे खड़े हो तो पेड़ की सरकमफ्रेंस को नहीं कवर कर सकते थे। उसको काट दिया गया। उन अधिकारियों की साठगांठ से हुआ, कैसे हुआ, इसका आपको संज्ञान में लेना बहुत जरूरी है। सर एक मिनट, मंत्री जी, जिस तरह से जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरे एरिया में बंदर बहुत है, और बंदर कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, थोड़ी सी आस्था का भी सवाल है उसमें। तो बंदर फसलों को नष्ट कर रहे हैं। छोटा किसान, मैं आपको सही बता रहा हूं कि छोटा 4-5 बीघे का किसान गन्ना नहीं बो रहा है, बंदर उसको खा जाते हैं। जंगली सुअर बहुत ज्यादा है और नीलगाय है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको भी मारने का ऑर्डर होना चाहिए या पकड़ने का ऑर्डर होना चाहिए, और जंगली, और ये नीलगाय का नाम बदल के अगर आप जंगली घोड़ा कर दें तो और आसानी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमती The wildlife protection. Honorable member, you are having only 2 minutes. You have to confine yourself to 2 minutes because so many members. Thank you very much, sir. सबसे पहले मुझे ये कहना है कि जितना सीरियसनेस से ये अमेंडमेंट लाना चाहिए था उतना सीरियसनेस नहीं है। और मेरा कुछ सुझाव है, चूंकि आपने बताया 2 ही 3 मिनट है, मेरा सुझाव ये है जो एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग का मसला है इसको बिल्कुल बंद किया जाए। क्योंकि एक एग्जाम्पल है असम डिब्रू साइक्वा का 2 साल कबल ऑयल इंडिया वहाँ एक्सप्लोर करती है और वहाँ ब्लो आउट फ्लेम की वजह से पूरा वहाँ का इकोसिस्टम बर्बाद हो गया और क्रूड ऑयल के स्पिल से वो अभी तक उभर नहीं पाया है।
उसी तरह सर मैं एक पॉइंट पे ले जाना चाहता हूं, जो वाइल्ड लाइफ में सेंचुरीज है, जो लगभग 1000 प्रोटेक्टेड एरियाज है, वहां पे जो गार्ड्स हैं उनको पुलिस के स्तर पे उनको पावर देना चाहिए और इक्विपमेंट देना चाहिए और फैसिलिटीज देना चाहिए, क्योंकि वहां से धड़ल्ले से पोचिंग होती है और फॉरेस्ट में जितने नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी भी चोरियां होती है। तो इसको रोकने के लिए मेरा सुझाव है। दूसरा, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 120 बिलियन डॉलर आज से 5 साल पहले ग्लोबल जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन था और लगभग 22 मिलियन लोग उससे जॉब सीख करते थे। और हमारे हिंदुस्तान में भी 15% के रफ्तार पे हर साल बढ़ता जा रहा है, तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और हर कमिटी में वहाँ के ट्राइबल्स और जो जानकार एनवायरमेंटलिस्ट है, नेचुरलिस्ट हैं, उनको कमिटी में साइंटिस्ट को रखना चाहिए। इसके अलावा जो एनजीओस काम करते हैं और जो बिजनेस है, कहीं पे अगर होटल्स के लोग बिजनेस करते हैं, उनको भी उस कमिटी में रखना चाहिए। सर 1 मिनट, मेरा 1 मिनट है। कहीं एक लॉ बना है कि 80% जो फॉरेस्ट है वो बंद रहेगा। इसका नतीजा ये हुआ है कि कई जंगलों में नक्सलाइट इन्फेस्टेड एरिया हो गया और वहां धड़ल्ले से टाइगर्स तक की पोचिंग हो रही है। एक गवर्नमेंट आंकड़े के तहत 100 से ज्यादा टाइगर्स मिसिंग है। मेरा रिक्वेस्ट होगा कि कोई भी एरिया रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, लेकिन रेगुलेटेड टूरिज्म होना चाहिए। और लास्ट सर, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिहार में सबसे कम फॉरेस्ट है और उस बिहार में सबसे कम हमारे एरिया में फॉरेस्ट है, इसलिए एक वहां पे छिछोरा झार जंगल है और कुछ झील्स हैं, जिसमें कचूदा झील है, मारामांदी झील है। मैं आग्रह करना चाहता हूं मिनिस्टर से कि इसको भी डेवलप किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। श्री सिमरनजीत सिंह मान। उससे बचने के लिए कम से कम विशेष रूप से व्यवस्था करें। धन्यवाद। श्री मोहम्मद फैसल जी। Thank you very much, Chairman sir, for allowing me to participate in the Wildlife Protection Amendment Bill 2021, and I'm thankful to my party for posing faith on me. The bill seeks to increase the species to be protected. I appreciate the kind of effort the Honourable Minister and the team have carried out to bring in a draft amendment by way of the Wildlife Protection Amendment Bill 2021. And I'm in support of the bill, but at the same time, I wish to get few clarification from the Honourable Minister on certain issues. The first one is the whole ambit of the bill. What I feel that the emphasis is more given on the management of the resources rather than the protection. Why I said wildlife management takes into consideration the ecological principles as such, as carrying capacity of the habitat, preservation and control of the habitat, reforestation, predator control, reintroduction of extinct species, capture and reallocation of abundant species, and management of desirable or undesirable species. Protection of wildlife and management of resources should be addressed with the same importance, and a shift from the protection aspect to the management of resources may weaken the protection strategies of scheduled fauna and flora. Further, sir, the proposed amendment must include a section to mandate the central and state government to protect and conserve areas outside the protection areas, which are known as recognized as wildlife habitats. The bill also misses an opportunity to recognize the protect corridors of the important migratory routes and flyways. Most of the proposed amendments lack the careful consideration, scientific rigor, and transparency that the exercise demands. The preamble itself is problematic. Whereas earlier the emphasis was on the protection of wild animals, birds, and plants, the amendment introduced the term management. While seeming innocuous, this implies a shift in the mindset of the government from the protection of wildlife to its management as a resource. So my second point is the vermin species. On this, the criteria need to be adopted, sir. In the present act, the central government can declare any wildlife animal
which is not in Schedule 1 and 2 of the Schedule 2, as vermin under Section 62. The proposed amendment has reduced the list of wild animals appended to the Act from 4 schedules to 2 schedules. In doing so, the bill now proposes that any wild animal not listed in the Schedule 1 can be declared as vermin, which means that all animals listed in Schedule 2 can't be declared as vermin. The list includes 41 mammals, 864 birds, 12 reptiles, 5 amphibians, 58 insects, 14 molluscs, and 10 sponges, which may be declared as vermin by the central government. While most of the animals which can be declared as vermin in the present Act and the proposed bill may not have significant differences in the composition of the species covered. And the other part is the central government must deliberate the justification on listing the vermin animals, because while the purpose of declaration of any animal as vermin has been to control the population of animal which is beyond management. Such an exercise must be undertaken with utmost caution and respecting the constitutional duty, Article 48A, of the government to protect the forest and the wildlife. So the third point is that, as far as coming to the elephant trade, the bill allows that. But here we need a clarification there, and the newly inserted Section 43(4) states that, with an inverted, the section shall not apply to transfer or transport of any live elephant by a person having a certificate of ownership, where such persons have obtained prior permission from the state government on fulfillment of such conditions as may be prescribed by the central government. Here, the section is unclear as to meaning of the prior permission from where. The state government, and from which state government? The government which is from where the origin of the transport is happening, or to the state which is going. So we need to have a clarification on such permission from where to where the animal is being transported. And such transport, I must say that such transport must be made, in the notice of the chief life wardens or the authorized officials. It is necessary for the interest of the elephant protection that any transfer or interstate transport to be notified to the chief wildlife or authorized official of the jurisdiction where the elephant has been transferred or transported from the jurisdiction to which the elephant has been transferred or transported. Such record should also be maintained by the concerned authority. So coming back to the centralization, this is the most important part which we are already discussing. On that part, the bill rendered the existing state boards for wildlife as a defunct one. The bill weakens premier institutions like the State Board for Wildlife, headed by the Chief Minister, for all their emphasis on clearing projects with the protected areas. Some state boards like Karnataka and Maharashtra have been proactive in expanding the protected area networks. It is now proposed to establish a standing committee of the SBWL to be headed by the Forest Minister, effectively rendering the SBWL defunct. This was the case with the National Board also, sir. Sir, to be headed by the National Board. Please conclude. Yeah, I'm concluding. It dilutes the gravities of the BSB, reducing the body to me. Yes, sir. I have some. Thank you, sir. Reducing the ambit of the gravitas of the BSBD, reducing to be a body meeting with the sole purpose of allowing damaging products with the PS. Sir, one more issue is that they are trying to include the Niti Aayog into the standing committee. Most of the Niti Aayog projects are contrary to the conservation part, sir. So this all aspect to be taken into consideration, and I need a clarification from the other side. Sir, final point. Increasing the ambit of legislation by using the term wildlife, which includes any animal, aquatic or land vegetation that forms a part of the habitat. As far as my constituency, because I'm concluding, sir, give me just 1 or 2 minutes, sir. As far as Lakshadweep is concerned, I urge that more detailed discussion should be there by expert in the listing of individual species instead of groups, sir. Listing of individual species instead of group is a major deviation from the current act, and it will need further consideration. This can give rise to taxonomic ambiguity when identifying species and filing wildlife offences in many cases, sir. Additionally, many species from these groups have not been included in the current schedule.
Also, new species are still getting described, which is especially true for invertebrates, corals, sponges, and amphibians. And these newly reported won't get due protection as per the legislation we are going for listing individuals instead of group. Sir, as far as Lakshadweep is concerned, marine life is not completely known till. Research works are going on to list undiscovered aquatic flora and fauna, which may contribute much more for the biodiversity concern. If individuals are listed instead of groups, sir, these individuals which should be protected for conservation of the ecological balance of islands can be included in the schedule, which may lead to large scale of destruction, which is going to happen by constructing the lagoon villa, sir. Though their name changed the water villa, the lagoon villa which is proposed to come in Lakshadweep is in the lagoon area. The lagoon area is the only area for the preservation and conservation of corals, which is the life of islands, sir. When the coral is destroyed, then the existence of island is on stake. And the administration is saying that the permission has got from the Environment Ministry. I'm very doubtful. I would like to get a note on that, sir, whether it is clear or not. And the final part, sir, see the sea cucumber. Sea cucumber is, is falling under the Schedule 1, which is protected under. But the problem is the awareness which is not given to the people there. The cost of 1 kilogram of sea cucumber. Sir, I'm just concluding, sir. Over. Just concluding. This is the most important part, sir. Sir, 1 kilogram of sea cucumber values nearly 5,000 to 12,000 rupees per kilograms. Now, recently, sir, to protect the sea cucumber, the same ministry, sir, you sanctioned a special scheme appointing marine watchers in the anti-poaching camps. Due to that, we could seizure the smuggling of these seafood smugglers, and there has been a CBI case on that, sir. But what happened after the new administrator came in, sir? Entire marine watchers, they have been retrenched from the job, and smuggling is going on, sir. I have highlighted the point. I have given a DO letter to you, sir. So this is concerned with the ministry's scheme, centrally sponsored scheme implementing the island. I don't know what is the problem with the administration to implement it. So kindly, sir, I am concluding it, sir. On this aspect, clarification is required from your side. With all this, I support the bill. Thank you so much, sir.